We are live now. Swami Vivekanand ji once said, "We are what our thoughts have made us." So take care about what you think. Words are secondary, thoughts live. They travel far. A very good evening and namaskar. I'm Devanshi Sharma, your host, and welcome to the 11th day of the live legal session for startup founders, Legal Pathshala 2022. आज तक जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया है और हमारे साथ पूरे 10 दिन तक हमारे साथ रहे हैं, तो सभी व्यूअर्स का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज हमारे साथ मिस्टर अनूप जी जुड़े हुए हैं, कंप्लायंस हेड Good एलजी evening, छेड़ा everyone. पार्टनर्स। वेरी वार्म वेलकम अनूप जी। Thank you, ma'am. तो आज हम बेसिकली कवर करेंगे लेबर लॉ बेस्ड कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग ईएसआईसी, ईपीएफ एंड द राइट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। So Agranshu sir, over to you. डेफिनेटली थैंक यू सो मच देवांशी। और एक बार पुनः जबलपुर स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से मैं श्री अनूप गुलानी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और बिल्कुल सही कहा देवांशी जी ने अभी। हमारे सारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो लगातार हमारी लीगल पाठशाला से जुड़े हुए हैं। और एक अलग ही माइलस्टोन जो है इस समय लीगल पाठशाला यहाँ क्रिएट कर रहा है। एंटरप्रेन्योर्स और वानाबी एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, वानाबी स्टार्टअप्स, वो सभी लोगों के लिए सारे वो I लॉज, think there's a net वो issue, sir. सारी टेक्निकल चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ वो आकर के किसी स्टेज पे फंस सकते हैं। ऐसे ही ये एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन आज हमारे साथ है मिस्टर अनूप डी गुलानी जी, जो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें लेबर लॉज, ईएसआईसी, ईपीएफ, इस सब पर बात करेंगे। आप किसी भी तरह से कभी फंसे ना इन सारे लॉज में, और क्या चीजें हैं जो शुरू से आपको अपने दिमाग में बना के चलनी है, और कैसे इस पूरी जर्नी को जो बहुत अप्स एंड डाउन से भरा हुआ होता है स्टार्टअप का, उसे हम ये छोटी छोटी सी जानकारियां होने के बाद बड़ा स्मूथ बना सकते हैं। तो अब और टाइम ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अनूप जी को कि वी शुड प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन। और डेफिनेटली सर, वेलकम वंस अगेन। हमारे सारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आज वो सारी महत्वपूर्ण चीजें जो आपके थ्रू लेबर लॉज और ईएसआईसी, ईपीएफ सब के बारे में उन्हें जानने मिलेगी, और छोटे छोटे से स्टेप्स जो उनकी इस जर्नी को स्मूथ बना सकेंगे। तो वेलकम यू सर, प्लीज। Sure. Thank you so much. Before to start and go ahead with, I would like to owe my gratitude to my Guruji, my mentor, Shri Hiren Chheda sir. Because of his training, his blessings, and his proper guidance, I am here today and able to share my knowledge and insights on the law. Going ahead and going further, I would also like to thank uh, JIC Legal Pathshala and of course Neil Thakkar, who introduced me to JIC and gave me the opportunity to share the synopsis. So without taking much of the time, I'll just quickly proceed with the topic subject. Just starting before, I have inculcated all the details in the PowerPoint presentation just for better understanding for everybody. But I'll just quickly run through and just majorly focus on the gist of the law and what is the object of the law. So just proceed. Next slide, please. Yeah. So today we are going to cover majorly the 5 acts. There are if you're not being surprised, there are around 44 central and state labor laws in India. So as it's time provided to me, I'll just try and just focus on the 4 to 5 major laws which we could just take cover, and hopefully if sir gives me the opportunity, we'll take more acts next time. So the acts is the first act is that the Maharashtra Shop Establishment Regulation Act 17, and next will be followed by the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act 1975, which is none but the profession tax. Then comes the Maharashtra Labor Welfare Fund Act 1953. Then it will be the Employee State Insurance Act 1948. And finally, the foremost, it's the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. So next, please. Yeah. So this I am focusing on the Maharashtra Shops and Establishment Act 2017. So
The reason of me to start ahead with this first act is that it is the base of the compliance. Whenever any shop or establishment is started in the state of Maharashtra, the first registration which has to be taken care is the Maharashtra Shop Act 2017. Next. Yeah, this is what I already said. Now, the shop act is applicable to the commercial establishments, that is the business centers, offices, hotels, eateries, etc. Next. Yeah. Now, what is the objective of that? This is very important. Any labor law in India, it has an objective to move ahead with. Now, this act is made framed in keeping the mind the objective, which is basically the protection of the rights of the employees majorly, and also the protection of the rights of the employers. Now, if you see what the right of the employees, it is basically that the employees get the payment of wages at the right time. What are the terms of service? That is, the appointment letters are issued duly, they are signed and accepted. And then what are the terms on which the leaves are applicable to the employees? The females who go on the maternity leave. These are all the working conditions, etc. etc. Basically, it is the protection of right of the employees. That is what the objective of the act is, and it is framed in that way. Next. Yeah, it is governed by the labor department, and basically it is a state act. See, every state has a different shop and establishment act. So this is every state inventory has its separate acts and regulations which replace to the shops and establishment. Going ahead, it as I rightly said, it takes care of the rights of the employees. At the same time, also takes care rights of the employees, like what will be the working hours, what will be the leave policy, what are the rest interval, opening and closing hours of the shops and establishment, closing days, national holidays, everything is covered. This is the majorly the objective and the scope which I was talking about. Next. Yeah. Some other points added which are covered by this act are maternity leave, terms and condition of payment, not to be happy, what are deductions from wages from the employee, then cleanliness to be maintained, fire precautions, record keeping, maintain wages registers, display of notices, what are the various acts that are applicable, and etc. etc. Next. Yeah. Now there is a specific definition which is provided that to us. What is a shop and what is a commercial establishment? See, a shop includes any premises where there is sale, there it's a retail shop, it is a wholesale shop, or where the services are rendered to the customers. It also includes storeroom, godown, warehouse, etc. from where the trade is carried on. And just to be taken care of, a shop, however, does not include a factory or a commercial establishment. A factory. Anup sir, you are not audible actually. Hello? Anup sir, we have just missed your voice. Okay. Okay, is it audible now? Is it audible Yeah, now? yeah, Yes, yes, audible, audible. perfectly. Perfect. Okay, no problem. No, I'll just repeat again. So as per the Maharashtra SN Act 2017, what is a shop? What is a commercial establishment? So here we have tried to define shop. So a shop is a premise where any the trade takes place, where the goods are sold. It either can be a retail place, a wholesale place, or it also includes a storeroom, a godown, etc. However, point to be noted that a shop, however, does not include a factory, because the factories are covered under a separate act, that is the Factories Act 1948. I'm audible now, ma'am, right? Yeah. Yes, sir, Next, please. perfectly. Yeah. Next, please. Next, please. Now here is again the thing. What is a commercial establishment? A commercial establishment is a premise where trade, business, or profession is undertaken, which may also include society, charitable trust, journalist printing establishments, etc. See, in the definition of establishment, even the educational institutes are covered.
Premises where the business of banking activities, insurance, stockbrokers, shares undertaken is also a commercial establishment. Next, please. Yeah, this is just a synopsis I've just provided quickly. Then what is the registration of software establishment, and what is needed? That it is just a process which is completely online in the state of Maharashtra, and even in the state of Madhya Pradesh it is online. So one needs to apply for the software registration within the prescribed time frame, which I have covered in the next slide. What is the time frame, and etc. etc. So the application has to be submitted to the chief inspector, wherein the basic details are required. It's very simple: name of the employer, address, number of employees you're starting with, and other relevant documents required. Next. Yeah, as I rightly said, it's taken by the labor department. In some states it has also been taken by the Mumbai municipal corporations, like in Maharashtra it is MCGM, and most of the states have now made it an online process, barring a few one or two union territories or states. Again, the point number 7, the registration certificate required to be renewed periodically. In the state of Maharashtra, it is not there, but in other state it is there. So it again depends, as I rightly said, varies from state to state, the policies. Next, please. Yeah. Simple documents are required for registration. That is the photo of premises, displaying the name board, the important certificate. If you are a partnership firm, there is the partnership deed, copy of PAN card, address proof, etc. These are basic documents required. Next, please. Yeah, important point. I start my firm with a strength of 10 employees. So the act is applicable to me. The Maharashtra SN Act 2017. Below that it is not applicable. You have to just intimate the MCGM. Once I start with 10 employees, tomorrow I turn to 20 and 30. I need amendment. So this is the amendment procedure, that you again need to submit the details to the government, because this is very important. From 10 year become 20, 30. So in case going forward, if there is any change in director, a place of address, you shift to another address, or any partner is changed, this won't be intimated to the government, and then you get a fresh certificate. Yeah. Last but the last point we need is to, is if any case due to sudden something you are not able to go ahead, then the shop or establishment gets closed. We have to intimate the same to the inspector within 15 days. That is very important. Now majorly we face one question, that why the registration of shops and establishment is important. So as I rightly said just 2 minutes before, it is the base based on which you can follow other compliances, and it is a proof of legal entity. It also helps you, I guess. No bank will, if you are open to a company, if you want to wish to open a current account, they will first ask you to open current account, and it also helps you in smooth inspections, and you get many other various benefits. So it basically gives you an identity, and also it is mandatory, of course, as per law. So we should go ahead with that. Next. Yeah, this one important. I just have inserted one slide on this. It's important self certification scheme which has been introduced by the government, and there is also a app known as a startup app. It what it basically says, that any startup which register themselves under this, so they will be they will be away from inspections. I mean, there are 8 to 9 labor laws covered. I have then mentioned below: Minimum Wages Act, Employment of Wages Act, PF, ESIC, etc. So the inspections will be not there, varying from the state to state, and it will not be there between the vary of 3 to 5 years. But important point: if there is any violation of compliance, or if there is any complaint made by any employer, etc., then the inspection will of course be there. This is a very important point to be taken care of. So people are the impression कि सेल्फ सर्टिफिकेट स्कीम में डाल दिया तो इंस्पेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है. अगर आपने कुछ वायोलेशन किया है, या किसी एम्प्लॉयर कंप्लेंट है, या इवन इफ समटाइम द गवर्नमेंट गेट्स द न्यूज दैट यू आर नॉट कंप्लाइंट, तो वो इंस्पेक्शन कर सकती है. बट ऑफ कोर्स वो इंस्पेक्शन प्रायर इंटीमेशन से होगा, आपको मेल आएगा प्रॉपर्ली से, और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं. नेक्स्ट स्लाइड मैम. These are the acts basically covered. There are also 3 environmental laws which are covered. I have not mentioned them. So lastly, you have to also file annual returns under the Maharashtra Shop and Establishment Act 2017, and likewise many other states are also required to file annual returns, that is by the 31st December or 31st March, depending upon the state policy. Next, ma'am.
finally, if you don't comply and you didn't take the registrations, of course you are bound to take a penalty. And again, it penalty amounts varies depending on number of employees and in which state your establishment is. Next, please. Yeah. Now, this is one of the most highlighted slide which I put in, and specifically considering the target audience of Maharashtra, मैंने ये slide जानबूझ के डाला हुआ है कि अगर आप एक शॉप या एस्टैब्लिशमेंट महाराष्ट्र में ओपन करते हो या मध्य प्रदेश में, तो आपको एप्लीकेबिलिटी कब लगती है. लाइक महाराष्ट्र में अगर आपके पास 10 एम्प्लॉई हैं तो आपको लेना जरूरी है, बट मध्य प्रदेश में वो मैंडेटरी नहीं है. कि जैसे कि मैंने कहा देयर इज स्टुपुलेटेड टाइम कि कितने टाइम फ्रेम में आपको ये लेना है. तो महाराष्ट्र में अगर आपने शॉप खोला है, यू हैव टू टेक इन विद इन 60 days. इन मध्य प्रदेश इट इज 30 days. देन व्हाट आर द ओपनिंग आवर्स? महाराष्ट्र में दीज आर द ओपनिंग आवर्स एज ए शॉप ईज एस्टैब्लिशमेंट. इन मध्य प्रदेश इट इज एज फिक्स्ड फॉर द गवर्नमेंट. वीकली क्लोज ये दोनों का सेम है. वर्किंग आवर्स अगेन इट वेरीज बिकॉज सेपरेट स्टेट. लीव पॉलिसी इट वेरीज. Important point, double employment. The Maharashtra SNE Act specifically restricts double employment. Employee cannot work in two establishments at the same time. But Madhya Pradesh SNE Act is silent on that. Then maintain the registers, you have to maintain muster roll, cleaning, maintain hygiene is important. Last at least said, see, annual returns are mandatory under Maharashtra SNE Act. But Madhya Pradesh Act के अनुसार वो mandatory नहीं है. Next, please. Yeah. So this is what I have covered in the Structure and Establishment Act. So the next act is the Maharashtra State Tax on Professions, Trade Callings and Employments Act 1975, which in simple language जिसको आप बोलते हैं प्रोफेशन टैक्स एक्ट. बड़ा सिंपल है. आपने फॉर्म चालू किया है, आपने शॉप एस्टेब्लिशमेंट ले लिया है, आपने एम्प्लॉय हायर कर लिए हैं, आपको एम्प्लॉयर का भी प्रोफेशन टैक्स भरना है जो कि सालाना 2,500 रुपया है. आपको एम्प्लॉय का प्रोफेशन टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी में से काट के वो डिपॉजिट करना है बाय एंड ऑफ द मंथ. सो आगे बढ़ के मैं आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन बताऊंगा कि क्या प्रोविजन है उसके. इट्स वेरी सिंपल. एनी पर्सन हु इज एंगेज इन प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग महाराष्ट्र हैज टू पे अ प्रोफेशन टैक्स. जैसे मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी, हिंदू अनडाइवर्ड फैमिली, कंपनी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट. हाँ जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. एनी डायरेक्टर और एनी प्रोपराइटर और कोई पार्टनर जो रजिस्ट्रेशन लेता है उनको पीटीईसी नंबर आता है, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट. हालांकि जब कोई कंपनी अपने आप को कवर करती है या फिर कंपनी को किसी अपने एम्प्लॉइज का प्रोफेशनल टैक्स भरना है, सो दे हैव टू गो अहेड फॉर विद प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज पीटीआरसी. दोनों के नंबर्स सेपरेट आते हैं. या अगेन देयर इज अ स्टिपुलेटेड टाइम. आपने जैसे शॉपिंग लिस्ट ओपन किया है महाराष्ट्र में 60 days है. लाइकवाइज आपने फॉर्म खोला है तो आपको 30 days में आपको ये एनरोलमेंट करना है. नेक्स्ट. हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है. सालाना एक एम्प्लॉयर को महाराष्ट्र में 2,500 रुपया भरना है एंड फाइनेंशियल ईयर जो भी है उसके 30 जून तक आपको वो पे करना है. लाइकवाइज किसी एम्प्लॉय का अगर जो प्रोफेशनल आपको भरना है, एनी एम्प्लॉय अर्निंग अ मंथली सैलरी अप टू 7,500, आई थिंक द स्लाइड इज चेंज्ड. या थैंक यू. Any employee which is earning up to 7,500, there is no profession tax to be deducted and paid. If he is earning in that month between 7,500 and 1 to 10,000, so 175 has to be deducted. I have specifically mentioned nil for women because 10,000 तक वुमेन एम्प्लॉय के लिए प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र में नहीं है. About 10,000, may it be a male or a female, it is 200 per month. But in the month of February, वो 300 है because as per the act, you have to pay around 2,500 per year. तो हर महीने 200 रुपया and Feb में 300, it comes to 2,500. It's that way. So this is for the employee part. Yeah. Returns, again eligibility criteria है. मान लीजिए कि अगर मेरी लास्ट ईयर की प्रोफेशनल टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा मैंने भरी हुई है एम्प्लॉयज की, तो मुझे इस साल से मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना है. और अगर मेरी लास्ट ईयर की पर्सनल टैक्स की लायबिलिटी 1 लाख से कम थी तो फिर मुझे मंथली ईयरली करना है. इट्स दैट वे. सो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशनड हियर. दैट्स द रीजन इट्स देयर अ डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिटर्न्स एंड मंथली रिटर्न. नेक्स्ट प्लीज. Yeah, this is again what I discussed
कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने शॉप खोला है तो अपना पीटीसी नंबर लेना है, एंड करेंट टैक्स ईयर की लायबिलिटी उसको किसी भी तरीके से 30 जून तक पे करनी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद पेनल्टी. दिस फाइनेंशियल ईयर, दिस इज मार्च स्टार्टिंग. Most important point for the profession tax, the financial year is March to Feb and not April to March. प्लीज नोट, क्योंकि आप बोलेंगे अगर अप्रैल टू मार्च है तो नहीं, इट इज मार्च टू फेब. तो अभी न्यू फाइनेंशियल ईयर फॉर द प्रोफेशन टैक्स स्टार्ट हो चुका है, तो उनकी आपकी लायबिलिटी आपको 2500 30 जून तक क्लियर करनी है. जस्ट टॉकिंग फॉर द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. या सो ये मैंने अभी डिस्कस आपको बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयज का जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करते हैं वो आपको लास्ट डे को भरना है, और अकॉर्डिंगली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो मंथली है तो लास्ट डे में रिटर्न फाइल करना है, या फिर एनुअली है तो फिर 31 मार्च के बिफोर. इज दैट वे. या दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसको प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता, या किसका प्रोफेशनल टैक्स एज ए एम्प्लॉयर आपको नहीं काटना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो बदली वर्कर होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आज 2 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन वहां काम किया, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उनका प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता. अगर कोई पर्सन है जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है कि उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, उनका प्रोफेशनल टैक्स एक एम्प्लॉयर को नहीं काटना है. अब किसी के पेरेंट्स और गार्डियन है जो जिसका बच्चा ये मेंटल रिटार्डेशन सफर कर रहा है, उसका प्रोफेशनल टैक्स नहीं काटना है. Any person, now person means everybody, जिनका लेटर बी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जिनका एज 65 के ऊपर हुआ है, उनका प्रोफेशनल टैक्स वो साल से आपको भरना बंद कर देना होगा. और बहुत सारे क्राइटेरिया है, लाइक मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, देन पार्टनर फ्रॉम एचयूएस, माथाड़ी कामगार, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब मैंने स्लाइड में डाला हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. या अगेन टारगेटिंग द टारगेट ऑडियंस ऑफ द मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 18750 है तो उनका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटेगा. अगर उनकी सैलरी 18750 से 25,000 के दरमियान है तो यू हैव टू डिडक्ट, द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट 125 एंड पे 25,000 to 33,333 is 167. Above that slab is 208, and here the due date is 10th of every month. That has to be taken care of. These are the updated rates with effect from April 2018. Of course, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, अगर आप फेलियर है, नॉन पेमेंट है, तो देयर इज अ पेनल्टी चार्ज. Next slide. Yeah, this was done with the Profession Tax Act. Now the next is the Maharashtra Labor Welfare Fund Act 1953. The objective of the act is very clear. It works for the welfare of the workers, to provide subsidy to the workers, to provide benefits, to provide various scholarships to the workers. Now it is applicable. Next slide, please. Yeah, see, it is applicable to all the establishments in the state of Maharashtra who are hiring 5 employees or above. The day you hire 5 employees, the MLWF Act is very much applicable to you. It includes everybody: banks, shops, companies, workshops, hotels, hospitals, etc. Now, the name says the Maharashtra Labor Welfare Fund. Okay, so we have impression ki workers ke liye. It is for the workers. It is for the employees, everybody. So it is very simple. There are 2 periods: 30th June and 31st December. So any worker, employee who are there on the muster roll as on 30th June and as on 31st December, their contributions have to be remitted by the employer by the 15th of July and 15th of Jan respectively. Now it is very simple. The managers are not covered under the act, and the supervisors who are earning a salary above 3,500, उनका MLW आपको नहीं काटना है. For all others who are eligible, there is a contribution of 12 rupees, 12 rupees from the employee's salary, and 36 rupees has to be borne by the employer. So that is 48 rupees. So assuming you have 10 employees on the muster as on 30th June, so it is 48 into 10, that is 480 rupees, which has to be borne by the employer and then deposited by the commissioner's office by 15th of July. So this is the nutshell and a gist of Maharashtra Labour Welfare Fund with respect to the contributions. Going ahead. Yeah. I have
The contribution is all very simple. I have majorly focused on what are the welfare schemes which are provided by the board, which are not normally major of the employers are aware of. So, see, if any student whose father is working in a company, and he's passing SSC and going for post graduation, technical mechanical engineering, he gets a subsidy from 2,000 to 5,000 rupees. He gets a scholarship. There are MPSC, UPSC examination. There are PhD students whose father or mother who are covered in MLWF, so they get benefits. Going ahead, ma'am. Next slide. When a person is going for higher education scholarship, then this is what they get: a scholarship, the amount scholarship up to rupees or tune of 50,000 rupees. There are weighing sewing machines which are government approved and which are provided by the government subsidized rates. That's what I mentioned here. It's very, very, very good for the working woman. Next. Yeah, this is again the criteria which is given by the scholarship for the working families for their proficiency in sports. The sports aspect is also covered by the MLWF. So if you are at the state level, then if you have come on the first, it's 5,000. It's all in monetary terms. It's 3,000. If national level, it's 7,000. Of course, international it's on 15,000. Going ahead. So this is this is there, and then more updated monetary benefits. This is what I was available with me. I have shared with you. Now there are major benefits which are also increased. Now if any person wants to purchase a textbook, they get a 50% discount or subsidy or that. If MSCIT, that is Maharashtra Certificate Information Technology, if that person is passing more than 60%, 50% of the government fees is paid by the government. That's very nice. And if anybody is interested in literature publishing, the liberator publishes written material, he gets subsidy, he gets a help of rupees 10,000 from the government. Next, please. Yeah. Again, the other aspect. First, they covered the working class. Then they covered the sports people. Then they covered the literature people. Now they are covering the illness part also for a human being. See, if there are workers, working families are to be cured, heart disease, etc., TB. So this is the subsidy rate which they get. This is the tuberculosis. Suppose it's, the cost of its suppose operation is 10 to 25,000. You get a subsidy of 5,000. Going ahead, these are the various slabs. So all the aspects are covered by the labor welfare fund. Next, please. Yeah, this is the PM Security Insurance Scheme, which is also included. Important point, God forbid somebody commits a suicide, so and that worker was covered, so there is also a plan to provide rupees 1 lakh in as a financial assistance to the family of that deceased member. It's that way. Next. Other schemes are there to just to motivate people, long trips you are going. So this is what the scheme says. And the driver vehicle training will also provided when the limit is between 18 to 40. He must at least have Part 8 standard. And there's a criteria: his income should not be less than more than 5 lakh rupees. Going next. Yeah. Now the government also promotes that our workers and employees should be fluent in English, and उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए. इसी के लिए उनके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं और सब्सिडाई प्रोवाइड करते हैं. एंड अदर लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, फ्रेंच, जापानीज, टू जस्ट टू पर्सनल डेवलपमेंट. तो हर एक एस्पेक्ट आपका लेबर वेलफेयर फंड में कवर हुआ है. नेक्स्ट. ये आपका यूपीएससी एमसी एग्जाम्स के लिए अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो प्रिपरेशन के लिए भी आपको सुविधा है वहाँ पे. आपको 250 रुपया भरना है एडमिशन फी. तो आपको जितनी भी ट्रेनिंग है, स्टडी मटेरियल चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा. डिसेबल्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है लेबर वेलफेयर फंड में. नेक्स्ट प्लीज. और विश्वकर्मा आदास कल्याण का अवार्ड, फिर वर्कर भूषण अवार्ड, ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं मैम. मैंने एक जस्ट फ्यू नोट किए हुए हैं, एंड एवरीबडी कैन रीड वंस आई शेयर द पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट. अगेन राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे कामगार मित्र अवार्ड, इट्स देयर. नेक्स्ट. वुमेन फेस्टिवल मनाया जाता है, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, फोक डांस कंपटीशन होता है, लीगल एडवाइस अगर आपको कहीं पे चाहिए सीनियर से, वो भी आपको मिलती है. नेक्स्ट. हाँ जी. अगेन मेरा टारगेट ऑडियंस मध्य प्रदेश है.
तो मध्य प्रदेश में भी लेबर वेलफेयर फंड वेरी मच एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी आपको हाफ ईयरली भरना है। फॉर्म ए फॉर्म है। यहाँ पे हर एम्प्लॉय कवर्ड है एक्सेप्ट जिसकी सेम लाइक सुपर मैनेजर कैपेसिटी में है, बट वहां पे जिनकी वेजेस एक्सीडिंग 10,000 वो लोग कवर्ड नहीं है। तो उनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10 रुपीज है एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 30 रुपीज। सेम 30 जून है, 31 दिसंबर है, यू हैव टू पे बाय 15 जुलाई एंड 15 जनवरी। वेलफेयर कमीशन एवरीथिंग दिस इज मच मोर सेम। खाली जो एक्सक्लूडेड क्राइटेरिया है महाराष्ट्र से वो कंपेयर दैट इज डिफरेंट फॉर मध्य प्रदेश। मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, कहाँ पे आप वेबसाइट जाके वो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड प्रोसीड विद द लेबर वेलफेयर फंड। नेक्स्ट। So we are very much in time. We have covered with the three acts. Now coming to the fourth one, that is the Employees State Insurance Act 1948. Next slide. I'll just give you the gist. See, during that period, 1943 and 1947, pre-independent, post-independence period, there was a need that any worker or any employee who is working with an establishment with a factory, तो something God forbid happens to him, तो उसका क्या, उसकी family का क्या? This is a social security act. So, considering the same, the government of India in March 1943, they gave responsibility to Professor Sri Mr. B.P. Adakar to just create a report कि भाई क्या हाल है हिंदुस्तान में वर्कर्स का, जो अपने एम्प्लॉय के दिन रात काम कर रहे हैं एंड जस्ट अपना पसीना बहा रहे हैं, तो कल उनको कुछ परिवार को कुछ होता है, उनको कुछ होता है तो उनके परिवार का क्या। फाइनली उनकी रिपोर्ट सब सबमिट हुई एंड प्रोमलगेशन बना एंड 1948 में एक विजन बना कि एंड फिर विच गिव टू द डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इट इज क्लियरली मेंशन्ड और इंडिकेटेड एंड इट वाज अ नीड बेस्ड। उस टाइम पे ऐसा कोई आपका कोई ऐसा कुछ था नहीं कि एम्प्लॉय को बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे क्या मिलेंगे। तो ये एक्ट के जरिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि अगर किसी एम्प्लॉय को ऑन द वर्क कुछ होता है तो उनको वेरियस कंटीजेंसी लाइक सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। कोई एम्प्लॉय अगर मेटर्निटी पे जाती है विद नेचुरल तो उनको मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा। भगवान ना कि कहीं मैं काम कर रहा हूँ किसी मशीन में मिल में तो मेरी उंगली कट गई तो मुझे टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है, तो मुझे वहां पे मुझे वेजेस मिलेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड गॉड फॉरबिड किसी की डेथ होती है या फिर मेरी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है, तो ये सब पॉइंट में रखते हुए ESIC Act, it is a central act again as it regulated by the central government, and they set up the ESI corporation. And first, basically, it was implemented at Kanpur and Delhi on 22 Feb 1952. Further, you're going ahead, the act also absolved the employer's obligations under the Maternity Benefit Act and Workmen Compensation Act 1923. Next slide. Yeah. See, very important. The benefits provided to the employees under the Act are also in conformity with ILO conventions, ESIC, established by ESIC Act. It is also an autonomous corporation. Uh, it is very much a legal entity. The ESI corporation can raise loans, take measures for discharging such loans with the price in central government, and can acquire both mobile and involved property. This is was slowly and gradually the development of ESIC, which I've highlighted. Next point. Yeah, I'll just cover quickly what is the scheme all about, who is not covered under ESIC, who is an employee, what is the registration, when is to be taken, what is an IPN number, and what is the definition of a family, what are the benefits, the procedure to take the benefits, what is the contribution period, and the salient feature of the benefits. I'll just try to take as much as possible and everything in detail I have mentioned here. He rightly said it is purely a comprehensive social security scheme designed to accomplish the task of socially protecting the employees in the organized sector against the events of sickness, maternity, disablement, death due to employment, injury, provide medical care to insured and families, etc. The word organized sector now ESIS is also focusing on the unorganized sector. That is very important point to highlight it and take care of going forward. Yeah. Now, when it is applicable, it is applicable to
all the factories who are defined as a factory under the Factory Act 1948, uh, applicable who are employing 10 or more persons. This is with effect from 1st June 20. And any establishment which government feels suits on may specifically notify as being covered. Now, any shop employing 10 or more persons, it is applicable. Uh, BSS is applicable on 10 or more persons under section 15, nothing but the shop, which got applicable in the state of Maharashtra with effect from 1st October 2020. And finally, also to construction site workers with effect from 1st October 2015. Now here I have mentioned to whom all the ESIS is applicable, but I have specifically put a small note, specifically the builder association. Now what happened? The construction site workers, the ESIS was applicable, made applicants with effect from 1st August 2015. बट क्या था कि उनको बेनिफिट में कुछ इशू आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो बिल्डर एसोसिएशन ने उस सर्कुलर को चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया उनका एसएलपी एंड उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया है। तो अभी उस कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स पे ऐसा स्टे है कि ईएसआईसी को उनसे कंट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर स्पेसिफिकली से ईएसआई कंट्रीब्यूशन कलेक्ट नहीं करना है और अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। वंस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स कि आगे क्या होगा, अकॉर्डिंगली द बिल्डर एसोसिएशन और द कंस्ट्रक्शन कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। इसी के लिए मैंने ये नोट डाला हुआ है कि किस किस को एप्लीकेबल है वो तो मैंने बता दिया, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट स्पेसिफिकली, तो मैंने वो डाला हुआ है। नेक्स्ट वन जी। नाउ कम्स द एलिजिबिलिटी। वेरी सिंपल। मेरी सैलरी 21,000 रुपया प्रति महीना है, तो 21,000 जिन जिन की भी सैलरी है या उनके नीचे है, उन सबका ईएसआईसी काटना मैंडेटरी है बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय का जो शेयर है वो कटेगा 0.75% ऑफ 21,000 एंड और 15,000 और 10,000, और एम्प्लॉयर का शेयर जाएगा 3.25%. It has to be deducted by the employer and it has to be paid by the 15th of the next month. So this is we are in the month of March. सबके सैलरी डिसबर्स हो चुकी है, so tomorrow is the last day to pay the ESH contribution for the month of Feb. अब now again the second point is important. मेरे पास employees है, the first one, the previous slide, yeah. नाउ इम्पोर्टेंट, मेरे पास डायरेक्ट एम्प्लॉई है जो मेरे साथ काम कर रहा है। अभी एक मेरे पास कोई एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर कवर्ड नहीं है ईएसआईसी में, उसके प्रति भी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मुझे उसके ईएसआईसी ध्यान से काट के भरना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी टेकन केयर बाय द स्टार्टअप्स। नॉर्मली एक इंप्रेशन क्या होता है कि मेरा एम्प्लॉय है, वो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय है तो ईएसआईसी का क्या वो देखेगा, ऐसा नहीं है मैम। उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। Then just again, to promote, to hire disabled employees. Any person who is classified as a disabled employee working in the private sector, जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ तक है, एंड अगर वो अपॉइंट हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी में 1 अप्रैल के बाद, उनका एम्प्लॉयर शेयर 3 साल तक गवर्नमेंट भरेगी। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया गया है, क्योंकि मोस्ट अभी तो मतलब द कल्चर हैज चेंज। पहले क्या होता था फादर्स वाले की डिसेबल्ड एम्प्लॉय को लेते नहीं थे, बट तो कंसर्न दिस गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जस्ट टू प्रमोट कि डिसेबल्ड लोगों को भी हायरिंग होना चाहिए। तो अगर आप हायर करते हैं तो उनका 3 साल का शेयर गवर्नमेंट भरेगी। एंड इम्पोर्टेंट इट इज स्मॉल, द लास्ट पॉइंट अगेन इम्पोर्टेंट, किसी किसी एम्प्लॉई का है जो डेली वेज वर्कर है, अगर वो 176 पर डे है तो उसका एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 0 होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर पर्सन ड्रॉइंग वेजेस अप टू 176 पर डे। तो 176 इंटू अगर आप 26 करेंगे तो आई थिंक कुछ 4756 कुछ आता है, तो उसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगा। तो वो बोलेगा 475 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन काटोगे तो बचेगा क्या। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसका ये ऐसे कटेगा। That's it. Next one. Yeah. अब ऑफ कोर्स किसका ये ऐसे नहीं कटेगा, जिसकी सैलरी 21 के ऊपर है, जो फैक्ट्री में जहां 10 एम्प्लॉय नहीं है, जो शॉप जहां पे 10 एम्प्लॉय नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रोविजन है, फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 787-90 ऑफ द ESIC एक्ट। एंड इम्पोर्टेंटली सीजनल फैक्ट्रीज, इसका एक इट्स अ बिग
सेक्शन, तो मैंने खाली हाईलाइट किया हुआ है. And mines covered under mines that and railway running fields, they are excluded from the ESIC. Now the next, who is exempted, this I've already covered. 21 के ऊपर जो है और 176 per day है. Next slide. Okay. Now this is just now see, every act has a different definition for the employee. The Provident Fund Act has a different definition. The ESIC Act has a different definition. So who are covered? जैसे मैंने बताया, who is directly employed by the principal employer and in connection of work इंसिडेंटल और क्रिमिनली, जो एस्टैब्लिशमेंट का काम कर रहा है या किसी प्रकार उस एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, वो एक एम्प्लॉय है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ESIC एक्ट. मैंने आपको पहले बताया, एम्प्लॉयड कवर्ड थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर, जो कि कॉन्ट्रैक्टर होता है और हमारे साथ काम करता है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु सर्विस इज अ टेम्पररी लेंट टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. फॉर एग्जांपल, मैं मेरे पास कोई एक एम्प्लॉय है जिसने मेरे पास 2 घंटे के लिए काम किया, तो अगर आप मेरी एस्टैब्लिशमेंट ESIC में कवर्ड है और किसी बंदे ने मेरे लिए 2 घंटा काम किया स्पेसिफिकली फॉर मी, तो वो एम्प्लॉय का भी ESIC आपको काट के भरना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जो बहुत बहुत कम जन काम. इसके लिए मैंने वर्ड डाला है, हु सर्विसेज आर टेम्पररी लेंट और लेंट ऑन हायर. उसने 10 दिन आपके पास काम किया और चला गया. आप बोलेंगे मैम मैं उसका डॉक्यूमेंट डिटेल्स कैसे लूं? आपको लेना है, आपको उसका भी ESIC काटना है. बिकॉज मैम अगर 10 दिन में उसको कुछ हो गया या कुछ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट विद द न्यूली स्टार्टअप्स हैव टू टेक इन केयर ऑफ, कि भाई मेरे एम्प्लॉय का तो काटना ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का उसका भी काटना है, जो टेम्पररी पर 2-3 घंटे काम करता है उसका भी मुझे काटना है. नेक्स्ट प्लीज. हाँ जी. नाउ दिस प्रीवियस स्लाइड तक मैंने क्या कवर किया था, किसको एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल है, किस किसको एप्लीकेबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. फ्रॉम दिस स्लाइड आई हैव जस्ट टर्न्ड द इंफॉर्मेशन लिटिल टुवर्ड्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये सब इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को होना बहुत जरूरी है कि जब मैं ESIC एक्ट के अंदर कवरेज लेता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय को कवर करना है. कवर करने के बाद मेरे प्रति या एम्प्लॉय के प्रति एज ए एम्प्लॉय मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है. तो इट इज लाइक कि जब एम्प्लॉय को आप कवर करोगे, एनी एम्प्लॉय विच इट गेट्स कवर्ड अंडर ESIC, assuming his date of joining is 1st of March, so before on or 10th of March that employee has to get covered under the ESIC. उसका ESI नंबर आना चाहिए. ESI नंबर लेने के लिए उसका आधार कार्ड, उसके बैंक डिटेल्स, नॉमिनी के बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगेंगे. उस बेस पे उसका TIC मेडिकल कार्ड विच इज नाउ नोन एज ई पहचान कार्ड, बिकॉज द मोमेंट उस एम्प्लॉय के आधार डिटेल्स प्लग इन हो जाते हैं तो वो आधार कार्ड पहचान कार्ड जाना जाता है. बेसिस ऑन ई पहचान कार्ड उस एम्प्लॉय को लोकल डॉक्टर के पास अपने आप को रजिस्टर कराना है. लोकल डॉक्टर को रजिस्टर कराने के बाद उसको वहां पे उसको बेनिफिट्स मिलेंगे. गॉड फॉरबिड उसको अगर कुछ लोकल डॉक्टर के, जैसे अगर मुझे कुछ सर्दी खांसी बुखार हुआ है तो मैं पहले डॉक्टर के पास जाता हूँ, सीधा अस्पताल नहीं जाता. डॉक्टर अगर मुझे बोलता है कि नहीं भाई अगर आपका अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको टेस्ट करने की जरूरत है, देन ही विल सेंड टू यू टू द हायर हॉस्पिटल और फिर आपका ट्रीटमेंट होगा. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉय को टाइमली रजिस्टर करे, एम्प्लॉय को अपना ई पहचान कार्ड दे और उनको उनको ज्ञान बांटे कि भाई आपको कौन कौन से बेनिफिट कब कब कवर्ड है और आपको कहाँ जाना है. मैम आज मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सडनली आई कैन नॉट कॉल माय एम्प्लॉयर, बोलूं कि सर मुझे कहाँ जाना है. तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर. स्टार्टअप्स प्लीज टेक केयर कि आपको एम्प्लॉय को फर्स्ट डे से गाइड कीजिए. बहुत बार ऐसा होता है कि ये ऐसे कटता है और 2-2 साल तक एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता कि भाई मुझे बेनिफिट्स कहाँ मिल रहे हैं. लाइकवाइज मैं आगे जाऊंगा मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताऊंगा. सी दिस इज मैंने जो आपको बताया कि उसको लोकल डॉक्टर के पास जो एरिया में रहते हैं आपको ई पहचान कार्ड ले जाना है, आपको वहां पे रजिस्टर कराना है. जो भी आपके फैमिली डिटेल्स हैं आपको ई पहचान कार्ड मेंशन करेंगे, आपकी फैमिली को भी वो बेनिफिट्स मिलेंगे जिनका नाम वो ई पहचान कार्ड में है. तो आपके फैमिली में कौन कौन है एंड हु इज द फैमिली एज पर द डेफिनेशन, वो मेंशन होना वो ई पहचान कार्ड में बहुत बहुत जरूरी. नेक्स्ट स्लाइड. आई जस्ट क्विकली रन थ्रू मैम. या दिस इज पर्पसली आई जस्ट पुट टू गेट अ पिक्चर कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को अपना नाम चेंज करना है या कुछ. कैसा था मैम, ESI एक्ट इज इन 1948 बट नेम एज पर द आधार एंड एवरीथिंग इट हैज जस्ट कम फ्रॉम द डे द UID has मेड द आधार मैंडेटरी. तो बहुत लोगों का नाम आस पर आधार नहीं है.
तो उनका नाम कैसे बदली होना चाहिए, क्या फॉर्म है, ये सब जस्ट मैंने शेयर किया हुआ। जस्ट क्विकली विल गो नेक्स्ट। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉई एक फर्म में काम करता है, बट कैसा होता है, समझो एक इलिटरेट पर्सन, उसको उसका ईएसआई नंबर पता नहीं है, तो दूसरे कंपनी में जाके काम करते हैं, बोलता है सर मेरा ईएसआई नंबर मुझे था नहीं, अभी दूसरा जनरेट कीजिए, तो नया जनरेट हो जाता है। व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस, बिकॉज मैम कैसा होता है, अगर एक ईएसआई नंबर पे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले 5 साल से गया हुआ है और आपने नया ईएसआई नंबर जनरेट कर दिया, तो वो ईएसआई नंबर पे कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 6 महीने का गया हुआ है, तो आपके जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कम हो जाते हैं। So then you have to merge the multiple ESI numbers and you have to take care and make sure कि एम्प्लॉय के जो भी प्रीवियस बेनिफिट्स थे वही नंबर पे ट्रांसफर हो जाए। तो ये अगेन एम्प्लॉयज को एक उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। या दिस इज अगेन आई पुट कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। इफ योर मैरिड स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, डिपेंडेंट चाइल्ड अप टू 21 ईयर्स एज, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट प्लीज मैम, दिस इज द डेफिनेशन आई पुट हु इज अ फैमिली। Yeah, this is important. Now see the just see the, this is, I'm just highlighting, these are the few benefits which I mentioned. There are a lot of benefits under ESIC, man. Few of them is medical benefit, sickness benefit, maternity benefit, disabled benefit, funeral expenses, etc etc. These are the few. ESIC act is huge, vast, और वो बहुत सारे benefit provide करता है। Next, मेडिकल बेनिफिट। एग्जाम्पल, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ईएसआईसी में कवर्ड हूँ, मुझे सर्दी खांसी बुखार कुछ हुआ है, तो मैं लोकल डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे चेक करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझे दवाई देगा, मुझे ट्रीटमेंट करेगा। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, कोई इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, तो ये मेडिकल बेनिफिट में कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, there are, this is important, there are various type of medical benefits which is the ESIC defined. प्राइमरी इट्स लाइक योर बेसिक एलिमेंट्स, आपको सर्दी खांसी या कुछ हुआ। सेकेंडरी, अगर जहां आपको किसी ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल की जरूरत है, जैसे सर्जरी है। टर्जरी, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट जहाँ पे आपको हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, एक्सेट्रा, तो दीज एवरीथिंग इज कवर्ड। नीचे मैंने जानबूझ के एक पॉइंट डाला हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट अवेलेबल टू आईपी इज कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ गुड न्यूज इज, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, ये भी अभी गवर्नमेंट ने फर्स्ट डे से कवर किया हुआ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो मतलब गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, आपको कवर कर रही है, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम एम्प्लॉय को जितने बेनिफिट दे सकें वो देने चाहिए। दिस इज, आई हैव जस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज सिकनेस बेनिफिट। गोइंग नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू अवेयर सिकनेस बेनिफिट, आपको क्या करना है, दिस इज आई हैव अगेन मेंशन्ड। नेक्स्ट स्लाइड। Maternity benefit, any female who is going for a maternity, she is eligible for, I'm repeating, she is eligible for a 26 weeks maternity leave from the employer to whom the ESS is applicable, 13 weeks prior, 13 weeks post. गॉड फॉरवर्ड अगर कुछ ज्यादा तकलीफ होती है तो 1 महीने की और उनको छुट्टी मिलती है, और जितनी भी टाइम पे वो छुट्टी पे थे 26 वीक्स के, उनकी पूरी उनकी सैलरी ईएसआईसी से मिलती है। यस मैम, आई एम रिपीटिंग, ईएसआईसी से मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सच अ गुड एक्ट। नेक्स्ट वन। या दिस आई जस्ट मेंशन्ड कि अगर आपको मेटरनिटी बेनिफिट लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी रेडी होने चाहिए, हाउ प्रियर प्रायर इंटीमेशन इंटीमेशन आपको अपने एम्प्लॉयर को देना है, so you don't rush up and hurry up at the end time. Next one. Disabled benefit. Now what is disabled benefit? There are two types, temporary and permanent. I am going on a work, या मैं मिल में जाता हूँ, मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, स्टिचेस आए हैं, तो मुझे मेरा कुछ काम ही सिर्फ जो मैं हाथ से करना है, तो जैसे स्विंग मशीन या कुछ मैं नहीं चला पा रहा हूँ, बिकॉज अंगूठा चाहिए और 2 फिंगर चाहिए, सो आई कैन नॉट वर्क, तो दैट इज द टाइप ऑफ डिसेबल्ड, टेम्पररी डिसेबल्ड बेनिफिट। तो उस दौरान आप घर पे रहेंगे, आपको जो भी वेज रेट प्रिस्क्राइब्ड एज पर द गवर्नमेंट, उतनी टाइम के लिए वेजेस आपको गवर्नमेंट देगी घर बैठे। देन इज परमानेंट डिसेबल्ड बेनिफिट। परमानेंट मीन्स आई एम अ व्हीकल ड्राइवर और मेरा हाथ कट गया तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकता, तो लाइफ टाइम मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये से मुझे बेनिफिट मिलेगा घर बैठे हुए। दिस इज व्हाट परमानेंट डिसेबल्ड बेनिफिट इज। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ नटशेल। नेक्स्ट वन। डिपेंडेंट बेनिफिट मैम, एज अ नेम इज, भगवान न करे कल मुझे कुछ हो गया, तो मेरी वाइफ को या मेरे पेरेंट्स को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा आफ्टर माय डेथ, एंड देयर इज अराउंड 15,000 फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलेंगे वन टाइम।
अगर मुझे कुछ हो गया तो, एंड मेरे बच्चों को टिल द एज ऑफ 18 उनको भी पेंशन मिलेगा. दिस इज डिपेंडेंट बेनिफिट. नेक्स्ट. Yeah, this is just the procedure. I'm not explaining because we are just short of time. I have to cover one more act, man. Next one. Yeah, this is just there are two contribution periods, April to September and October to March. So if you have contributed till 30th September, तो आपका उसका बेनिफिट कमिंग जैन से लेके जून के बीच में मिलेगा. एंड इफ यू हैव डन द कंट्रीब्यूशन 31st मार्च, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो उसका बेनिफिट आपको कमिंग जुलाई से लेके दिसंबर तक मिलेगा. दिस इज व्हाट आई मीन. बिकॉज बहुत जन का क्वेरी होता है कि अगर मैंने इस टाउन छोड़ा तो मुझे उस पीरियड के बेनिफिट्स कब तक मिलेंगे. तो दिस इज व्हाट द स्लाइड आई हैव हाइलाइटेड. Yes. Again, the salient features. All types of employees are covered. I mentioned clearly. आपके direct employees, contractual, casual, part-time. Under ESIC, there is nothing as a temporary employee, part-time, casual. He is working with you directly, indirectly, incidental to the work of the principal employer. He is your employee. वो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको उसको ESIC का ध्यान देना. जहाँ जिस दिन उसने ज्वाइन किया डे वन से, अगर उसकी सैलरी 21,000 से नीचे, आपको उसको ESIC में कवर करना है. कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, इट इज नॉट अ मेडिक्लेम कि वो ESIC में कवर्ड होगा उसको बेनिफिट मिलेंगे नहीं. कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है. ESIC कट रहा है, बेनिफिट्स मिलेंगे. कोई अपर एज लिमिट कवरेज की नहीं है. 55 तक काम कर रहा है, 60 तक काम कर रहा है, अगर आपका अपॉइंट लेटर में रिटायरमेंट एज एम्प्लॉय की मेंशन नहीं है और 65 तक काम कर रहा है, उसको बेनिफिट्स मिलेंगे. सुपर स्पेशलिटी के बारे में बता चुका हूँ. एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉड फॉरवर्ड कभी कुछ एक्सीडेंट होता है तो इट इज ट्रीटेड एज एम्प्लॉयमेंट इंजरी. व्हाट आई मीन इज, रिसेंटली केस हुआ था एक एम्प्लॉय को हार्ट अटैक आया था, तो हम जस्ट गए थे, तो बहुत जन ने बोला कि इट इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट इंजरी. बट ESIC का एक जजमेंट है, सर्कुलर है, जो क्लियरली बोलता है हार्ट अटैक व्हाइल ऑन ड्यूटी इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इंजरी अंडर ESIC. Secondly, some accident, something happens, we have to update and report to the employer within 24 hours. अब ऐसा कब बहुत बार होता है कि रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं कर सकता. इन दैट केस आप लेट इंटीमेट कर सकते हैं, एंड बट आप बाद में एक लेटर दे सकते हैं ESIC को कि मैंने लेट इंटीमेट एम्प्लॉयर को क्यों किया, बिकॉज यू नॉट इन अ पोजीशन. दीज आर सम मोर सेलिएंट फीचर ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ ESIC. नेक्स्ट वन. Yeah. Finally, foremost important, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. Again, it is a social security scheme which was launched by the government of India to protect the employees while they are working with the establishment. After they leave the job, God forbid somebody expires, to take care of their family. Going ahead, I'll just show you the objective. Yeah, see, EPF scheme, it is a mandatory saving scheme for old age, as I rightly said. Pension scheme is pension once you retire from your establishment. God forbid something happens to me, the pension will be given to my family, my children till they turn 21. Employees deposit linked insurance under EPF Act. There are contributions which are made into four various accounts. The reason is that EPF Act itself has three schemes. That's Employees Provident Fund Act Scheme 1952, which deals with the Provident Fund; Employees Pension Scheme, which specifically deals with the pension fund; and Employees Deposit Linked Insurance, which deals with the insurance. Now, what is EDLI? This is specifically given to the family of the deceased. Uh, only time when if somebody expires, only that time EDLI is given to the family of the deceased family. Going forward, I'll just show some more highlights on that. EPFOs, sorry, ma'am, just previous slide. Yeah, EPR mission is always to extend and reach the quality of publicly managed old and income security, and through consistent programs and standard of compliance. Now everything is online, so they are making people more aware. I mean, what knowledge the people had about EPF Act just 10 and 12 years back. अब बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया अब लोगों में और जागरूकता हो गई है कि PF एक्ट
है क्या। पहले तो लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि मेरे सैलरी से पीएफ कटता है और वो होता क्या है। बट ईपीएफओ को आप देखते होगे, आए दिन ईपीएफओ ट्वीट करता है, इंस्टा पे डालता है, दिस इज व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन। नेक्स्ट वन। हाँ जी, किसको एप्लीकेबल है, एनी फैक्ट्री जहाँ पे 20 एम्प्लॉई अबाउ 90 उनको एप्लीकेबल है। एनी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 है उनको पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है राइट फ्रॉम द डे यू हायर 20 एम्प्लॉइज। थर्ड पॉइंट इज, अगर एक मैं एज ए गुड एम्प्लॉयर मुझे चाहिए कि मुझे हर एम्प्लॉय को पीएफ देना है, भले मेरे पास 20 एम्प्लॉय नहीं है, तो वो भी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईपीएफ एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि आप हमको इंटीमेशन कीजिए, अंडर सेक्शन 14 ऑनलाइन फॉर्म भरिए, हम आपको वॉलंटरी कवरेज दे देंगे, आप वो एम्प्लॉयज का पीएफ भर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट की हुए, देर वॉज लिटिल एम्बिग्यूटी ऑन दिस कि बैंक्स पीएफ एक्ट के अंदर कवर्ड है कि नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बैंक्स हु आर एम्प्लॉइंग 20 और मोर एम्प्लॉइज, they are covered with effect from 10th Feb 2016. This has to be taken. Yes. Next one. Eligibility. See, ESIC में क्या था? It was a gross salary. Like my basic is 10,000, my HRA is 5,000. तो मेरी टोटल सैलरी होती है 15,000, तो 15,000 पे आप ESIC काटोगे. But PF is specifically on basic wages, which is defined under Section 2B of the Act. And इट्स लाइक कि प्रायर टू 1 सितंबर 2014 अगर किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक 6,500 या उससे कम था, तो मैंडेटरी वो पीएफ में कवर्ड होना था। बट फ्रॉम 1 सितंबर 14 गवर्नमेंट एनविसार्ज्ड एंड दे हैड अ विजन कि नहीं यार, और एम्प्लॉयज को भी कवर होना चाहिए और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलना चाहिए पीएफ एक्ट का। तो दे रेज द सीलिंग एंड 15,000। तो फ्रॉम 1 सितंबर 14 जिस एम्प्लॉय का बेसिक प्लस दिए 15,000 या उसके नीचे है, उसको आपको मैंडेटरी पीएफ में कवर्ड करना है, मैंडेटरी। अबव 15,000 उसका बेसिक है तो इट्स नॉट मैंडेटरी। अगेन लाइक ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने जस्ट टू encourage the employers to hire the disabled people, उन्होंने सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी डाला है। 25,000 वाला भी यहाँ पे, वो डिसेबल एम्प्लॉय 25,000 वाला भी कवर हो जाएगा। That's what they have put in. Now, after globalization 1991, many foreign nationals, multinationals, they have started coming to India. They are doing a setup. So government felt in 2008 कि नहीं यार, अभी अगर कोई इंटरनेशनल वर्कर अगर यहाँ पे जाता है इंडिया से, सॉरी फॉर एग्जांपल एनी इंटरनेशनल वर्कर इज कमिंग फ्रॉम एक्स कंट्री टू इंडिया, और एनी इंडियन एम्प्लॉय गोइंग टू फॉरेन, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का क्या। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो इंडिया से 1 साल जर्मनी जा रहा है और फिर जर्मनी से वापस आ रहा है, तो उनके कॉम्प्लायंस का क्या। तो उसके लिए उन्होंने एक पैरा इंसर्ट किया, एंड स्पेसिफिकली इंसर्ट द पैरा इज पैरा 83 ऑफ द ईपीएफ एक्ट 1952, which specifically deals with the international workers and their benefits and then compliances. So this is one very key good point which government started, and startups have to take care of this point very importantly, because सबको पता है कि ठीक है इंडियन एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय है, 15,000 के नीचे बेसिक है, तो मैं पीएफ काटूंगा। बट अगर कोई इंटरनेशनल वर्कर आता है तो कंप्लेंट्स कैसे करना है, क्या करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट पॉइंट मैंने डाली हुई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर 14 के बाद 15,000 का सीलिंग हो गया, तो ऑल एम्प्लॉय जिनका बेसिक 15,000 के नीचे उनका पीएफ कटेगा। बट अगर किस एम्प्लॉय को पीएफ का मेंबर बनना है जिनका बेसिक 15,000 के ऊपर है, तो वो भी एम्प्लॉय पीएफ का मेंबर बन सकता है। बट देयर आर टू क्राइटेरिया। फर्स्ट इज उसका पेंशन नहीं कटेगा। व्हाट इज दैट, आई विल टेल यू जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। उसका पेंशन नहीं कटेगा। एंड सेकेंडरी, देयर शुड बी अ जॉइंट कंसेंट व्हिच हैज टू बी फिल्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, कि हाँ भाई मुझे पीएफ एक्ट नहीं लगता बिकॉज मेरा बेसिक 15,000 के ऊपर है, बट मुझे पीएफ काटना है, एंड आप भी काटोगे तो कंसेंट भर के मुझे सबमिट करना, फिर आप उसका पीएफ काट सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ मैम, ये नाउ मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरी मेरी बेसिक इज 15,000 रुपीज, सो मेरा एम्प्लॉय शेयर कटेगा 12% फ्रॉम माई सैलरी। एग्जैक्टली मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर बेयर करेगा 12%। उसपे से एम्प्लॉयर के 12% में से 8.33 विच इज डाइवर्ट टू टूवर्ड्स ईपीए, दैट इज पेंशन स्कीम, विच आर जस्ट डिस्कस्ड।
सो एम्प्लॉयर के अकाउंट में जमा होता है पीएफ, एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा होता है 15.67% एज अ पीएफ, 8.33% एज अ pension. But the total, I'm just repeating, the total contribution in Provident Fund is 25%. Just 12% is employee, 12% is employer, and one more percent which is borne by the employer, which is admin charges. वो क्या है admin charges, क्यों है, वो मैं आपको आगे आगे बताऊं. Next slide. Yeah. So it's same. ESIC के जैसे आपको उनका पीएफ काटना है, एंड जैसे अभी 14 मार्च है, टुमारो 15, तो आपको उनका पीएफ काट के आपको फरवरी का कॉम्प्लायंस 15 मार्च टुमारो ऐसा लार्ज है, जो आपको ड्यू डेट है आपको भरना है. अगर आप नहीं भरेंगे, अकॉर्डिंगली आपको डैमेजेस एंड इंटरेस्ट दोनों लगेगा, डिपेंडिंग आपने जितना लेट पेमेंट किया हुआ है, एज पर द सेम प्रोविजन ऑफ द ईएसआईसी. नेक्स्ट वन. हाँ जी, दिस इज व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड. अकाउंट वन एम्प्लॉय का 12% जमा होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से 3.67, 15.67, एंड अकाउंट टू इज एडमिन चार्जेस जो कम से कम 500 रुपए होना चाहिए. फर्स्ट टू इज रिलेटेड टू ईपीएफ एक्ट 1952, अकाउंट 10 is related to EPS scheme 1995, and account 21 is related to employee default linked insurance, which is account 21 0.5% to be which is to be taken care of. जो आप हेलो हेलो. हेलो हेलो, चलिए देखिए, अनूप सर, आई थिंक आवाज आ पा रही है आपको? अनूप जी का आवाज हमें फिलहाल इसमें नहीं आ पा रहा है. डेफिनेटली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो खासकर ईएसआईसी के बारे में और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में जो है हमें अभी यहाँ पर अनूप गुलानी जी ने लगातार बताई. और यही वो चीजें हैं जो हमारे स्टार्टअप्स को भी ध्यान रखना होती हैं. और देखिए, गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो लगातार प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉयज के लिए, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होती हैं. डेफिनेटली ये जो सेशन था हमारा पर्टिकुलरली क्योंकि इन लॉज के बारे में ज्यादा था और समझने की चीजें ज्यादा थी, तो डेफिनेटली आई होप उन्होंने बहुत इजी शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में जो है अनूप जी ने हम तक ये सारी चीजें पहुंचाई हैं. आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से पहुंची होंगी. और डेफिनेटली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं और जो लोग इस शो को देख रहे हैं, वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं. डेफिनेटली उनकी वो क्वेरीज जो है वो सॉल्व करी जाएंगी. साथ ही आज का फिर एक बार जो है क्विज फ्लोट किया जाएगा, तो आप सभी लोग उस क्विज को भी अटेम्प्ट करें. आई होप दिवांशी जो है हमें कल के टॉपिक के बारे में बताएंगी कि कल कौन सा टॉपिक जो है अब कवर होने वाला है. और डेफिनेटली सर, तब तक हम कल हम अपने स्टार्टअप्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे, और किस टाइप की स्कीम्स हैं जिससे वो फंडिंग ले सकते हैं. इन सब की चर्चा कल हम करेंगे शार्प 5 PM पे. किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण शायद अनूप जी हमसे दोबारा नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो टाइम भी अब हो चुका है. सो बिल्कुल हम डेफिनेटली हमारे काफी सारे अच्छा व्यूअर्स. अनूप सर ने बताया हमें, काफी नॉलेजेबल चीजों से उन्होंने सभी व्यूअर्स को आए नो उन्हें जितना भी लेबर लॉ है, जो भी चीजें हैं उन्हें बिल्कुल समझ में आई होंगी. तो थैंक यू सो मच अनूप जी थैंक को यू भी, एवरीवन. थैंक यू सो मच अग्रांशु सर. एंड थैंक यू. till we meet next tomorrow, you all take good care of yourself and keep learning. Thank you so much. Definitely. Stay tuned with Legal Pathshala. Great. Thank you.